एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ का सबसे क्रूशियल स्टेप होता है एंड देर आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस दैट यू मस्ट फॉलो आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर. नंबर 1, स्टिक टू योर मेडिसिन शेड्यूल. आपके डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन जिस भी टाइम पे प्रिस्क्राइब करी हैं, यू हैव टू कंसिस्टेंटली एंड रूटीनली टेक दोज मेडिसिन एट दैट टाइम ओनली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिसिन बोली गई हैं कि आपको दिन में 2 बार लेनी है, देन यू हैव टू टेक दम एट एन इंटरवल ऑफ 12 आवर्स. जो मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी होती हैं, यू हैव टू टेक दम एट एन इंटरवल ऑफ 8 आवर्स. स्पेशल एम्फोसिस फॉर द इंजेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंजेक्शंस डेली इंजेक्शंस लेने हैं, देन यू हैव टू टेक दोज इंजेक्शंस एवरी डे एट द सेम टाइम. वाई? बिकॉज these hormones have a duration of action for 24 hours. If the duration of gap between the injections is more than 24 hours, the hormonal level drops down, which is not needed. So taking the injections every day at the same time is very important. Number 2, taking a healthy diet. A healthy diet which has low fat, low carbohydrate, high protein is very important. Plus, you have to take this diet with a lot of fluids. Maintaining hydration is very important. At least 2 to 3 liters of water per day is very, very, very important. Excess of vegetables, lot of fruits, either in the form of fruit juices or in the form of smoothies, or you can take yogurt also. This is important. घर का बना खाना खाना ज़रूरी है, बाहर का खाना अवॉइड करें. Certain foods like raw papaya, raw pineapple, they should be avoided. Why? Because they are found to increase the contractions of the uterus, so they are considered to be abortifacients. Other foods like uncooked meat, unboiled eggs, they should again be avoided. Why? Because you might catch some sort of infection with these foods, which right now is definitely not something that we want. Bed rest. All the patients who go through the embryo transfer procedure, they have this one question कि हम घर जा कर के क्या क्या काम कर सकते हैं और हमें क्या क्या काम नहीं करना, हम नॉर्मल डेली रूटीन फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं या नहीं. सो लेट अस क्लियर दिस कन्फ्यूजन. Basically, you should definitely avoid any heavy physical activity, definitely avoid going to gymming, lifting heavy weights. Any strenuous physical activity should be avoided. Routine physical activity like light walking, सोसाइटी पे नीचे जाके पार्क में घूमना, घर का छोटा मोटा काम करना, it is definitely recommended by the guidelines. There are no guideline that says that absolute bed rest is needed. In fact, absolute bed rest might do more harm to you than good, because आप जब daily routine physical activity resume करते हैं, the blood flow to the uterus increases, which further increase the chance of implantation. So absolute bed rest is not recommended. आप हल्का फुल्का काम दिन में आराम से कर सकते हैं. Last but not the least, manage your stress levels. I know how stressful this period might get, waiting for the results and just praying that the results come positive, but still try to distract yourself in all the activities that you like, in your hobbies, because this will definitely be helpful keeping you happy during this time. And finally, be happy, keep faith, because miracles do happen. Comment embryo transfer for more details.